Dear student, in previous lecture we had already covered the conductometric titration. Right now, which electrode used in a conductometric titration, that is important. तो conductometric titration के लिए हमें चाहिए conductivity cell. It is an electrode used to measure the conductance of a given electrolyte. Okay, तो क्या होता है? Let's see the diagram. Diagram, it consists of a various part. कंडक्टिविटी सेल के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि ग्लास सेल, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, मर्क्यूरी कॉन्टैक्ट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इबोनाइट कवर एंड कॉपर वायर. These are the diagrammatic representation of the conductivity cell. तो क्या होता है इसमें? देखो, what is the role of each and every part? Glass cell is used to hold the electrolyte. ग्लास सेल का रोल क्या है? इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को होल्ड करने वाले, प्लेस करने वाले. The next is platinum electrode. This glass electrode having two electrode metallic plate which is made up with the help of platinum. It is used to improve the surface area as well as to connect this platinum electrode to the copper wire toward the power supply. Next is a mercury contact. The role of mercury contact is to connect the electrode to the copper wire. This mercury contact जो है, इसका रोल क्या है? हमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को कॉपर वायर से कनेक्ट करने का काम ये मर्क्यूरी कनेक्ट करने वाला है. देन वी हैव द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. जिस सॉल्यूशन का हमें कंडक्टेंस मेजर करना है, दैट इज प्लेस इन अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इनसाइड द ग्लास सेल. कॉपर वायर, इट इज यूज्ड टू कैरी द करंट फ्रॉम पावर फ्रॉम द outer source toward the conductivity cell. Then ebonite cover. The role of ebonite cover is to hold the whole assembly firmly as well as to prevent the contamination inside the conductivity cell. So these are said to be the construction of the conductivity cell. How it works? Whenever we are passing the current, जब हम लोग करंट पास करने वाले हैं, तो through the copper wire, through the electrode, the current pass from the power supply into the electrolyte solution. Then the electrolyte solution get dissociate into the ions. Ions form में वो dissociate हो गए. After the dissociation, we can measure the resistance. After measuring the resistance, we can convert that resistance into the conductance form. That is all about your conductivity cell related with the conductometric titration. Thank you so much.